Have you ever planned on taking a trip over 1,000 miles away without any plan? Well, that's what I'm doing today. I just landed here in Fort Lauderdale. आपने कभी सोचा कि आप एक ट्रिप लो, एक ट्रिप प्लान करो 1000 मील दूर और कोई प्लान हो ही ना, लेकिन वो प्लान आज हम पूरा करेंगे। मैं अभी फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में लैंड हुआ हूँ। हम एक्सप्लोर करते हैं फोर्ट लॉडरडेल को आज। We'll explore Fort Lauderdale today without any plan. So stay tuned, guys. Welcome to another vlog. Welcome to Fort Lauderdale. Let's go. लो जी, मैं पहुंच चुका हूँ। बीच का नाम है Dania Beach. So I just arrived here at Dania Beach here in Fort Lauderdale, and weather today is a little bit chilly. It's windy as usual on the beach. हवा चल रही काफ़ी बीच पे यहाँ पे। मौसम ठीक है, सूरज निकला हुआ है, हल्के हल्के बादल भी हैं, लेकिन थोड़ी हल्की हल्की ठंडक है, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जैकेट पहनी हुई है। जैकेट तो मैंने वहाँ से पहनी हुई थी जब मैं जहाज़ पे बैठा था। But anyway, let's go check it out, guys, how everything is going to be here at this beach. So let's see. Come on, let's go. You know what? Let's go. Let's walk further down. थोड़ी सी आगे जाके walk करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। थोड़ी आगे walk करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो बीच शुरू होते ही ख़त्म हो गया, आगे पानी शुरू हो गया। Gonna walk further down. I think there's one pier as well. We'll walk on the pier. Let's see how it's gonna be. So let's go. Stay tuned, guys. Don't go anywhere. It is going to be a very unplanned trip. Unplanned, what I mean by that is I did not really plan anything, what we're gonna go see or what we are not gonna see. One thing actually I forgot to mention, as you can see, today I'm here by myself. आपको जैसे आज थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि आज मैं अकेला आया हूँ, बनी भाई नहीं आए मेरे साथ, वो इस वीक बिजी थे. You know, as you can see, I'm here by myself today. Usually Bunny bhai is with me, but he was busy this week, so that's why I came by myself. But anyway, let's go and see how this beach is. Actually, I have landed many times here in Fort Lauderdale, but I have never explored Fort Lauderdale city. So tonight we'll probably go to downtown as well and see how everything is here. Usually मैं यहाँ पे फोर्ट लॉडरडेल में काफ़ी दफ़ा बहुत दफ़ा लैंड हो चुका हूँ. हालांकि मायामी में जब मैं आया था तब भी मैं इधर ही लैंड हुआ था फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पे, लेकिन मैंने जो सिटी है फोर्ट लॉडरडेल का सिटी वो एक्सप्लोर नहीं किया. So आज हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे रात के टाइम. So let's see how everything is. So stay tuned, guys. Just enjoy the view. Now, one thing I realized is it's not really that hot today for some reason, like it usually is in Florida. इतनी कोई गर्मी नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी चल रही है. मे भी उसकी वजह से भी थोड़ा मौसम सही लग रहा है. Check it out. Look how close the water is here. चेक करो ज़रा पानी कितना ऊपर आया हुआ है. लेकिन मैं आगे जाता हूँ, आगे आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है. So let's go, guys. Like I was saying earlier, I did not plan this trip. It's very unplanned trip. So we're just gonna freestyle it. What I mean by that is we're just gonna explore and see as we go. So let's do this. मैंने ये कोई ट्रिप को इतना प्लान नहीं था किया कि हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या बनता है. लेट्स सी. यहाँ पे फ्लोरिडा में जब आप आते हो तो मेनली यहाँ पे बीचेस वगैरह काफ़ी फेमस हैं. यहाँ की मौसम तो है ही, मौसम की वजह से लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं सारी स्टेट्स से और बाहर के मुल्कों से भी. लेकिन उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई ऐसी कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है. जैसे म्यूज़ियम्स वगैरह होते हैं, म्यूज़ियम्स तो हैं काफ़ी, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन म्यूज़ियम्स और वो इनडोर एक्टिविटी मैं थोड़ी अवॉइड करना चाह रहा हूँ. You know, if you come to Florida,
Florida is known for its beaches. They have very nice beaches, as you can see. And talking about beaches, there's many other videos that you can see that I have been to here in Florida, and link you can find probably up in the corner. But Florida, of course, like I said, this was very unplanned, very raw type of trip. So we're gonna explore as we go. Florida is known for its beaches, and besides that, there's museums and stuff like that too here. But I'm trying to avoid those because I want to show you guys around what the city is all about. Anyway, let's walk further down. Let's see how everything is. Let's walk up here a little bit. और मैंने पहनने भी check करो ज़रा. Look what I'm wearing, and I'm walking around here at the beach. Check it out. This is a different type of beach. Almost all beaches here in Florida, all the famous ones, they all have like a slight different touch to it. They all are little slightly different than each other. यहाँ पे जितनी भी हैं beaches वगैरह. How you doing? Coconut? No, I'm good. Thank you. I don't have any today. I won't have any sales, but I might have some for sale tomorrow. They have coconut jelly. Coconut jelly? You ever have coconut jelly? Maybe tomorrow if I can come here. Okay. Yeah. I might have some for sale tomorrow. Sounds good. Thank you. Okay. Anyway, check it out, guys. लोग भी सोच रहे होंगे मैं जी पूरी पैंट शर्ट पा के जी बीच च वड़े हाँ. It feels kind of awkward, walking around at the beach looking like this. Kind of weird, but it is what it is. But check this out. It's not very busy on this side, which is good. There were a lot of people back that way. उधर ज़्यादा लोग थे, पर इस साइड पे इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं. और मायामी बीच भी यहाँ से कोई तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है. Miami Beach is about half an hour drive from here. So basically, if you go further down this way, that's where you hit Miami South and North Beach. अगर आप इस साइड पे जाओगे तो कोई आधे घंटे की ड्राइव होगी यहाँ से, वहाँ पे मायामी बीच आ जाता. अगर टाइम लगा तो मायामी बीच भी आपको अगर आपने वीडियो उधर मैं पहले गया हुआ हूँ. वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, लेकिन वीडियो के लिए मैं एक दफ़ा गया था, वो मैं लास्ट ईयर गया था. और अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, वो भी देखें, वो भी बड़ी अच्छी वीडियोस हैं मायामी बीच की. I have gone to Miami beaches many times, but for the video I have gone I think one time last year, and if you have not watched that video you should go and check that out as well. Anyway, check it out. Let's go explore what else is there. There's something back there. There's some people like fishing or doing something. Let's go check it out. उधर वो पीछे करके लोग कुछ कर रहे हैं, पीछे भी पानी सा बना हुआ है, कोई तालाब सा बना हुआ है, तो उधर देखते हैं कि उधर क्या सीन है. So let's go, guys. It's been a while I have done a vlog by myself. बहुत देर हो गई कि मैंने vlog खुद किया अकेले, क्योंकि यूजली बनी भाई मेरे साथ होते हैं. तो थोड़ा सा मुझे आज अजीब सा लग रहा है, but it is what it is. I gotta do what I gotta do. It feels a little bit different today since he's not here with me, but it is what it is. We gotta make this happen. We cannot stop these videos. हम ये videos रुकने नहीं देंगे. ये चेक करो जी, ये चेक करो, पीछे कोई तालाब सा बना हुआ है और लोग यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं. चेक करो जी, इधर बोट्स वगैरह भी छोटी छोटी kayaks वगैरह भी रखी हैं. They got some kayaks and small boats here. चेक करो जी, इधर भी पानी ये कनेक्ट होता होगा कहीं. इधर बोट्स वगैरह यार्ड्स वगैरह खड़ी की हैं इन्होंने. Got some yachts parked over here. I'm pretty sure this connects to the ocean some other way, I guess. But yeah, and there's people fishing over here. Check it out.
और पानी के अंदर भी गए हुए हैं। चेक करो, पानी है वैसे साफ, वाटर इज़ क्लीन बाय द वे। Check it out. Anyway, let's go further down. Let's see what else is there here at Dania Beach. Dania Beach, I think that's how you say it. Dania Beach. I don't know. But yeah. Oh, ये scene check करो. This is a scene that I love. Check this out. These coconut trees blowing in the wind. ये scene check करो जी, क्या ही scene है. इधर जी कोई फैमिली अपने रोटी लेके आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं. I like how they have these picnic tables. Not all the beaches have these type of stuff. You know, usually you just bring your own stuff and you sit down. You know, put something on the ground and eat if you want to eat or whatever. But yeah. Anyway, this is a pier here at Dania Beach. Let's go and see what else we can find. Let's actually go under the pier. The pier सी बनी हुई है इसके अंदर, उसके नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है. The लोग वगैरह बैठे हुए हैं. You know, there's some kids. I don't want to film them. That's why I was trying to avoid. चेक करो, क्या ही सीन है. चेक करो पानी कहाँ तक आ रहा है. क्या ही सीन है. इधर ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या. Let's go up here and see what's can get a nice view. Check it out. I think the restaurants are कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे. They got some restaurant up here. Yeah, they got some snack shop here. And I think if you want to go inside, you have to pay for it, which we're not about to do that. But they got a small restaurant up here, I guess. Anyway, let's go down. लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं 80 ते सारे पजामियां दे फेर रहे हैं ते ऐ क्यों पूरी पैंट शर्ट पा के आया है. People looking at me weird. You know, everybody's wearing shorts and swimming suits and I'm here, you know, fully clothed, nice guy. Anyway, it is what it is. इधर चलते हैं, देखते हैं इधर क्या सीन है.
वो जो मैंने आपको यार्ड्स वगैरह दिखाई थी ना, वो पीछे पार्क की हुई हैं, तो इससे इधर से देखते हैं क्या सीन है. The yachts that I showed you guys from the other side there, we're gonna go check it out from this side here. Let's see. चेक करो जी, क्या बात है जी, मिलियन डॉलर्स की याटें खड़ी हैं यहाँ पे. Check it out guys, all these yachts. One day it's gonna happen, and one day is gonna come very soon. Stay tuned guys. सीन चेक करो, बाकी गल्ला छोड़ो, व्यू, ये फ्लोरिडा के व्यूज़ का ही तो कमाल है. चेक करो जी, क्या सीन है, क्या खूबसूरती है. एक चीज़ मैं कहूँगा कि मायामी की बीच इस वाली बीच से बेहतर है. वन थिंग आई विल से इज़ मायामी बीच इज़ मच बेटर देन दिस बीच फॉर सम रीज़न. That's just my personal view. But if you're watching and you made it to this part or made it this far, you should leave a comment. What do you guys think? What is the best beach in Florida? Just give your opinion. Nobody's right or wrong. कोई गलत और सही नहीं है. अगर आप इस पार तक पहुंच चुके हो तो आप बताओ कि आपको फ्लोरिडा में कौन सी बीचेस अच्छी लगती हैं, कमेंटों में डालो अगर कोई देखता है वीडियोस हमारी तो. But yeah, check it out. Very nice. This is all parking lot. For 1 hour you pay $5, but there's also other prices too. I will let you guys know if I find it, but I paid only $5 something for 1 hour. एक घंटे के $5 लगते हैं यहाँ पे पार्किंग के लिए. पार्किंग का वैसे यहाँ पे निज़ाम अच्छा. That's one thing I'll say is very positive. The parking spot here is right at the beach. It's a paid parking. How you doing guys? It's you pay $5 and there's some other prices too, but I'm not really sure. But I paid only $5. लेकिन parking की situation अच्छी है. But parking here is right at the beach. As you can see, that's beach right there, and this is parking here everywhere. And there's a lot of parking. And let's check that place out, see what that is. वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है. ये कुछ उन्होंने बनाया हुआ है वेलकम सेंटर सा डानिया बीच का. So let's check it out, see what they have in there. I need some water. थोड़ा पानी चाहिए मुझे. ना मैंने पानी लिया है, ना कुछ खाने के लिए भी लिया है. Haven't ate anything. I ate in the morning, but very little. It was too early. So I need to get something to eat too. Well, no, I shouldn't. I just held them down to the ground and explained to them. How you doing guys? I just held them down and explained to them. Yeah, geez, let's see. Florida friendly boating. Okay, let's go inside. These look like just some offices. ये कोई office से लग रहे हैं, office building. Oh, actually ये bathroom भी है. Oh, never mind. There's nothing really else actually. और कुछ नहीं है यहाँ पे. But anyway, चलो वापस चलते हैं. अभी वैसे मैंने थोड़ी वॉक की है ना, तो अभी थोड़ी गर्मी महसूस होना शुरू हुई है. Now that I have walked, now it's starting to feel little bit hot, but still it's a little bit chilly. I wouldn't say it's hot, but it's okay. Actually, you know what? Let's walk further down this way. Let's see what it is. I don't think so. I don't think they. Let's go up here.
इधर भी रश पड़ा होगा. Anyway, let's go from here, and let's find some other place to go, because we have, again, like I say always, we are on a very tight schedule all the time. हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी मतलब एक जगह पे ज़्यादा इतना टाइम स्पेंड कर सके. इसीलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ और फिर हम चलते हैं किसी और जगह. I'll leave from here and we'll try to find some other place to go. So we can try to cover as much as we can. I'm going to try to avoid going to Miami because I have shown you guys those videos are already up. I have already been to Miami, and the video is up. If you haven't seen it, there should be a video in the link, or you can just go and check on my channel. Miami में थोड़ा avoid करना चाह रहा हूँ ताकि मैं पूरा सही तरह Fort Lauderdale जो है वो आपको दिखा सकूँ. So yeah, so let's go guys. So what I'm thinking right now is I'll go to downtown here in Fort Lauderdale. It's called Hollywood Downtown. Let's see what we can find there. I'm hungry too. I want to get something to eat. हम चलते हैं Hollywood Downtown यहाँ पे Fort Lauderdale में. So let's see how it's gonna be. So let's go guys. मुझे भूख भी लगी है, so मैंने खाना भी खाना है कुछ. So yeah, let's see.